Good morning, dear students. I'm Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School, Ambala Cant. In the previous video, we talked about menstrual cycle. Today, we'll just take a review of what all we have discussed. So we discussed this diagram in the previous video. Let's talk about this a little more. So let's talk about first of all menstrual phase, which is called the bleeding period. It is the first phase of menstrual cycle and lasts for almost 3 to 5 days. It's the phase in which there is breakdown of the endometrial lining and the blood vessels also break down. So it leads to bleeding which comes out through the vagina. It occurs only when the ovum is released and fertilization does not occur, right? So you must remember that menstrual phase will occur only when there is no fertilization. Lack of menstruation is an indication of pregnancy. Next is the follicular phase, which we also call as proliferative phase. It lasts for almost 1 to 14 days. And the menstrual phase is followed by the follicular phase. The primary follicles, it grows into the Graafian follicle, and the endometrial regenerates is the proliferation. Now, gonadotropins act upon the pituitary and it releases FSH and LH in return, which increases and stimulates the follicular development. This in turn increases the estrogen secretion by the ovaries, and which in turn then grow of the follicles. LH and FSH attain peak in the middle of the cycle that we discussed in the previous video also, which is around the period of ovulation. Now, rapid secretion of LH, I told you it is called LH surge, right? It induces the Graafian follicle to rupture, and then there is release of the ovum from the Graafian follicle, and then it regresses into the corpus luteum. Now, the third phase is the phase in which it begins after the ovulation, and the ruptured Graafian follicle transformed into the corpus luteum. So it's called luteal phase. It produces large amount of progesterone essential to maintain and proliferate endometrium. Endometrium is necessary for the implantation of the fertilized egg. So if fertilization occurs, corpus luteum will grow further and the pregnancy will continue and the menstrual cycle will stop. In the absence of fertilization, Graafian follicle transformed to yellow bodies which are called as corpus luteum. Now, corpus luteum secretes high amount of progesterone, right? And then it degenerates into corpus albicans. Now, decrease in the progesterone leads to menstruation. As I told you, progesterone is very important for the endometrial lining. So, once the progesterone level decreases, the endometrial wall starts breaking and leads to menstruation. Menstrual cycle ceases at 50 years and this is called menopause. The cyclic menstruation is indication of the normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. Menarche is the beginning of the menstrual phase and menopause is the stoppage. Now, fertilization and implantation. Now, after the ovum is released, if there is coitus at the time when the ovum is present in the ampulla, then if insemination occurs and the sperms reach ampulla region, then the fertilization can take place. So the motile sperm, they have to swim rapidly and they have to pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the junction of the isthmus and ampulla. So I told you ampullary isthmic junction is the point where the fertilization occurs in the fallopian tube. Now, fertilization, if the ovum and sperm are transported simultaneously, only then this can take place. Now, fusion of sperm and ovum is called fertilization. Now, sperm first of all comes in contact with the outer layer of the ovum, which is called zona pellucida. And it induces certain changes in the membrane, which blocks the entry of other sperms. Now, acrosome of the sperm, as we discussed earlier also, which is called the cap-like structure present at the head of the sperm, contains certain enzymes like lytic enzymes, hyaluronidase. We talked about it earlier also. So it helps in the breakdown of the zona pellucida so that the sperm head can enter inside. It gets embedded and releases the nucleus inside the cytoplasm of the ovum, where the fusion of the nucleus between the ovum and the sperm takes place. Now, meiotic division of secondary oocyte. Now, here, this is the time when the meiosis completes, so that the secondary oocyte now divides into the ovum and the second polar body is formed. Now, this oocyte or the ovum, now this oocyte, as I told you, undergoes certain changes and converts into ovum. Now, nucleus of the ovum, as we talked, if fuses with the sperm nucleus, then we call this cell will be now called as the zygote. Now, sex of the baby is decided at this stage because
the sperm has the chromosomes either 22 plus X or 22 plus Y. So whatever this nucleus will contain, the chromosome either X or Y will determine the sex of the child. So here we'll detail here what is happening. So sperm nucleus is present inside the sperm head and it has the cap-like structure acrosome. Now acrosome starts reacting and it releases the enzymes which help in the breakdown of these zona pellucida so that the head can penetrate inside, and when once this head part, the initial part, enters inside the ovum membrane, then it will release its nucleus inside the cytoplasm which can then fuse with the nucleus of the ovum. Now, next we come over to the implantation and the cleavage. Now, so far we have discussed about the different stages, that how the secondary oocyte is converting into ooted, then ovum, and then how does the fertilization take place. And now we are going to talk about what will happen next. So after the fusion of the nuclei, the formation of zygote takes place, and this zygote then divides from 1 to 2 cell to 4 cell to 8 cell and then to the 16 cell and so on. Now these are all the mitotic divisions, but we call them as cleavage. Now why do we call them as cleavage is an important question that you must understand. Now why are we calling this process as cleavage is because the zygote, as you can see, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है बहुत ही क्लियरली कि अगर आप देखोगे तो साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. जाइगोट का साइज, 2 सेल्ड स्टेज का साइज, 4 सेल्ड स्टेज का साइज, 8 सेल्ड का साइज, 16 सेल्ड का, ब्लास्टोसिस्ट का, दे आर ऑल द सेम. और यहीं से एनसीईआरटी अपना पॉइंट प्रूव कर रही है कि यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है. कैसे प्रूव कर रही है? क्योंकि सेल विदाउट अंडरगोइंग G1 G2 फेज सिंपली माइटोटिक डिवीजन करे जा रहा है. इट इज नॉट अंडरगोइंग G1 G2, तो ग्रोथ हो ही नहीं रही है, सिर्फ क्या हो रही है, सेल की डिवीजन हो रही है. इसीलिए वो क्या दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल सेम साइज दिखा रहे हैं, कहीं भी ग्रोथ नहीं हो रही है. Right, so there is no G1 G2 phases involved, rather the cell is just undergoing mitotic cleavage. So यहाँ पर आपके पास 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 celled बन रहे हैं. 8 to 16 celled जो stages होंगी, they'll be called as the morula stages. Now at this stage, now this will now be embedded. Now अब इस stage में आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर morula stage के बाद जो हमारी आ जाएगी next blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट में क्या आपको नजर आएगा, बहुत ही क्लियर एक बाहर की लेयर नजर आएगी, a layer which is surrounding this inner cell mass called as the trophoblast. और अंदर की तरफ जितना भी आपको ये नजर आएगा, this will be called as the inner cell mass which will later develop into the ectoderm, mesoderm and endoderm. जैसे कि आपको पता है कि humans ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो इनमें सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज का डेवलपमेंट जो है वो 3 जर्म लेयर्स से होता है, तो वो 3 जर्म लेयर्स का यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इम्प्लांटेड, अब जो ये इम्प्लांटेशन है वो कहाँ हो रही है, इन द एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ द यूट्रस. तो एंडोमेट्रियल वॉल जो है उसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट जो है उसके साथ एडर कर जाएगा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडरेशन विल बी कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन के अंदर 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, एक है ऑटोसोम और एक है सेक्स क्रोमोसोम. ऑटोसोम्स 44 रहते हैं जबकि सेक्स क्रोमोसोम है XX और XY. मेल में होता है XY, फीमेल में XX. फीमेल गेमीट्स हमेशा होमोगेमेटिक होते हैं क्योंकि सेम टाइप का गेमीट होगा 22 प्लस X. लेकिन मेल्स में हेट्रोगेमेटिज्म आ जाएगी जिसमें ईदर 22 प्लस X और दे में बी 22 प्लस Y. तो 50% चांसेस हैं कि the ovum can fuse with either the sperm carrying 22 plus X or it may fuse with the one carrying 22 plus Y. So अगर for 22 plus X वाला 22 plus X वाले ovum के साथ fuse करेगा gamete, then there will be formation of a girl child. जबकि यही अगर मैं बात कर रही हूँ sperm में 22 plus Y chromosome है, तो वो अगर 22 plus X वाले ovum से fuse करेगा, then there will be formation of a boy child. So that's the mechanism of sex determination in human. Now we've discussed about the cleavage. Now here we've talked about the inner cell mass and we've talked about the trophoblast, जो बाहर की लेयर है trophoblast, जो कि आगे embedded हो जाएगी endometrial wall में. And this process, the complete attachment of blastocyst to the uterine
endometrium is called implantation. Now here you can see this process of implantation in which the blastocyst is now getting embedded in the wall of the uterus. Now pregnancy. Notice pregnancy. After this implantation has taken place, there will be formation of the chorionic villi, which are finger-like projections which arise from the trophoblast. And these villi are surrounded by the maternal blood and the uterine tissues. Now villi in the uterine tissue now get interdigitated and they form the structural and functional unit between fetus and the maternal blood called as the placenta. So एक discoid structure develop होता है between the fetus and the mother called as placenta. Placenta और बेबी के बीच में भी एक कनेक्शन रहता है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं which is called umbilical cord. मैंने आपको भी बताया था इनर सेल मास आगे डिवाइड कर जाएगा इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जिनसे आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा. अब तक हमने पढ़ा था प्लेसेंटा के बारे में हमेशा से कि वो हेल्प करता है न्यूट्रिशन में और प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. लेकिन यहाँ पर अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज द एंडोक्रीन ग्लैंड और रिलीज करता है हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन. साथ ही साथ रिलीज होता है इस टाइम में ओवरी से रिलीज होगा प्रेगनेंसी के टाइम में रिलैक्सिन. तो बेटे ध्यान रखना है सब बच्चों को कि ये 3 हार्मोन, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास. देयर इज चांस कि इनमें से कौन से हार्मोन्स हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं, तो वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है. प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी रिलीज होता है, ऑल्दो उसको हम प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं. उसका रीजन ये है क्योंकि वो एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है. अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी और प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर सकती है. लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में जो रिलीज होते हैं वो है HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, साथ ही साथ ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, और तीसरा मैंने आपको बताया रिलैक्सिन जो कि रिलीज होगा ओवरी से. ये तीनों वो हार्मोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं. अब इनकी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर बताती हूँ कि जो ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन है HCG, ये वो हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स में टेस्ट किया जाता है. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रेगा न्यूज या इस तरह के जितने भी टेस्टिंग किट्स आते हैं उनमें यूजुअली टेस्टिंग किस चीज की जाती है, इसी हार्मोन की HCG की टेस्टिंग की जाती है. सो दिस इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज ये रिलीज होना शुरू हो गया, अगर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो गया, दैट मीन्स दिस इज प्रेगनेंसी इज अश्योर्ड. इसके साथ ही एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट भी होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा, फीटस से, मदर्स ब्लड से फीटस तक पहुंचता है. ग्लाइकोजन को कुछ टाइम तक स्टोर करता है जब तक कि लिवर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है. उसके बाद ये इफेक्टिव बैरियर है जो कि टॉक्सिक केमिकल एंड जर्म्स को फीटस तक पहुंचने नहीं देता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली किस तरह से दिखाया गया आपको. तो दिस इज द इन्वर्टेड पियर शेप यूट्रस है जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है. बाहर की लेयर आपको योक सैक दिखाई देगा, इसके बाहर है द कैविटी ऑफ यूट्रस जिसमें कि यहाँ पर बेबी ग्रो कर रहा है. प्लेसेंटल विलाई जो कि इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया ताकि बच्चे तक न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंच सके, सप्लाई ऑक्सीजन की हो सके. और बीच में यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा के साथ ही यहाँ पर इस डिस्कॉइड स्ट्रक्चर के साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि कनेक्ट कर रहा है फीटस को टू द मदर. Then here you can see the plug of mucus in the cervix. तो ये cervix है जिसने कि इसको क्लोज करके रखा हुआ. मैंने आपको बताया था कि cervix के अंदर बहुत ही strong muscles होते हैं. कौन से muscles? Which muscle? cervix. cervix के अंदर मैंने आपको बताया था कि cervix के अंदर sphincter muscles होते हैं जो कि बहुत strong होते हैं ताकि pregnancy sustain कर सके. So अब देखिए यहाँ पर डेसिडुआ. डेसिडुआ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक लेयर्स यहाँ पर बन रही हैं. तो यहाँ साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैटरनल ब्लड वेसल्स और किस तरह से मैटरनल आर्टरीज, वेन्स जो हैं वो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं फीटस के साथ. बिल्कुल इंटरकनेक्शन हो रहा है इनका आपस में. और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, लुक एट दिस, अम्बिलिकल कॉर्ड एक डेवलप हो रही है जो कि मदर और फीटस के ब्लड को आपस में कनेक्ट कर रही है. ताकि ये देखिए दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ताकि यहाँ से सब सप्लाई स्मूथली प्लेसेंटा के थ्रू हो सके टू द फीटस.